Hello class. Today we are going to discuss a new chapter in science. The chapter number is 3 and the chapter name is coal and petroleum. Firstly we discuss the introduction. Have you ever wondered where does the fuel for vehicles, cooking gas in home and the energy of light up our cities come from? These sources of energy are derived from natural resources like coal, petroleum and natural gas. Millions of years ago, the remains of plants and animals were buried deep inside the earth. Over time, they transformed into valuable resource through intense heat and pressure. The resource play a critical role in our daily lives, but they are limited and can be exhausted with overuse. अब यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप है दो, इनएक्सहॉस्टिबल और एक होता है एक्सहॉस्टिबल. इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. Inexhaustible natural resources are available in abundance and not likely to be depleted by human activity. ये ह्यूमन एक्टिविटी से डिप्लीटेड नहीं हो सकता है, नो मैटर हाउ मच वी यूज. यानी ये अनलिमिटेड होते हैं. ठीक है, कितना भी यूज करो ये खत्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट, एयर. ठीक है, फिर आता है एक्सहॉस्टिबल, है ना. तो ये एग्जिस्ट इन limited quantities and can be exhausted due to overuse. Once depleted, their resource cannot be generated quickly and may take millions of years to form again. ये लिमिटेड होते हैं, एक बार यूज कर लो तो ये खत्म हो जाते हैं और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स. ठीक है, इसके बाद द स्टोरी ऑफ कोल. You may have seen coal or heard about it. It is a hard black substance that feels as tough as stone. Coal has been one of the most important fuel for centuries and is still widely used today. In earlier times, it was commonly used in railway engines to produce steam to power trains. Today, coal is a major fuel source for cooking, electricity production, industrial process for thermal power plant. The formation of coal. कोल का फॉर्मेशन देखते हैं, है ना, किस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है. यहाँ दे रखा है हैव यू एवर वंडर्ड वेयर कोल कम फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड. ये बहुत ज़्यादा एक टाइम ले लेता है. लेट्स टेक अ जर्नी बैक इन टाइम टू अबाउट 300 million years ago. During this period, the earth was covered to dense forest. कवर्ड थी किससे? अर्थ डेंस फॉरेस्ट से. ठीक है, especially in low-lying wetland areas. Over time, these forests faced natural disaster like flooding, which caused the tree and plants are get buried under the layer of soil. As the forest sank deeper into the earth, more soil accumulated over them, compressing the dead plants. The uses and product of coal. ठीक है, when heated in air, coal burns and produce carbon dioxide gas. However, coal is also processed in industry to produce a variety of useful products. Let's take a closer look at the same of the product. Same product भी होते क्या? कोक, कोलतार, इस टाइप का होता है कोलतार. नेक्स्ट है कोल गैस, है ना, ये इसके अदर प्रोडक्ट है. इसके बाद अपन बात करेंगे पेट्रोल, डीजल एंड द स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम. You know that petrol is widely used as a fuel in light vehicles such as motorcycles, scooters and cars. On the other hand, diesel is used heavy vehicles like truck, buses and tractors. Also in car. But have you ever wondered where petrol and diesel come from? कहाँ से आते हैं? They are both derived from a natural sources called petroleum. पेट्रोलियम से बन के आते हैं. ठीक है, ये है डिपोजिट ऑफ पेट्रोलियम. ये वेल्स होते हैं, यहाँ गैस होती है, ऑयल होता है, ये वाटर होता है, रिजर्वॉयर रॉक होती है. यहाँ पे गैस को रिमूव किया जाता है, गैस को बाहर निकालते हैं वेल्स के मीडियम से, है ना. ऑयल को रिमूव किया जाता है. इसके बाद है हाउ इज पेट्रोलियम फाउंड.
पेट्रोलियम जो होता है वो फॉर्म होता कैसे है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म billions of years ago from the remains of tiny marine organism. टाइनी मरीन ऑर्गेनिज्म के मिलियंस ऑफ ईयर दबे रह जाने के बाद जो फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम. When these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and were buried under the layer and sand and clay. Over time, due to the lack of air and under the influence of high temperature and pressure, these dead organisms were transformed into petroleum and natural gas. इसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी. इसके डिस्कवरी की हिस्ट्री आप देखेंगे. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है. यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल के यूजेस है. इधर एक टेबल दे रखी है, टेबल डिस्कस करते हैं. वेरियस constituent of petroleum and their uses. तो सबसे पहला है क्या? पेट्रोलियम गैस. इसके जो यूजेस हैं, यूज्ड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल, हीटिंग एंड कुकिंग. पेट्रोल फ्यूल फॉर कार, मोटरसाइकिल एंड लाइट व्हीकल. डीजल फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स, ट्रक्स, बस एंड जनरेटर्स. lubricating oil reduce friction in chemical and engines. Paraffin wax used in candle, cosmetic and polished. Kerosene used in jet fuel for domestic lamps. Next है नेचुरल गैस, अ क्लीनर एंड वर्सटाइल फॉसिल फ्यूल. जो नेचुरल गैस होती है वो क्लीनर है और वर्सटाइल फॉसिल फ्यूल है. नेचुरल गैस इज अ हाईली वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल in meeting energy needs worldwide. One of the main reason for significance is that is relatively easy to transport through a network of pipes, making it accessible for various purpose. In its compressed from natural gas known as compressed natural gas, CNG कहा जाता है जिसे. एडवांटेज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल CNG के एडवांटेज देख लेते हैं. उसके बाद यूजेस ऑफ नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या है वो देखेंगे. नेचुरल गैस रिजर्व इन इंडिया. नेचुरल गैस जो रिजर्व है इंडिया में उसके बारे में याद दे रखा है, ये डिस्कस किया है. द नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फ्यूल यूज, फ्यूल के रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट है किस तरीके से फ्यूल के रिस्पॉन्सिबल यूज को किया जाता है. ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, इस तरीके से यूज करा जाए. स्विच ऑफ द इंजन को ऑफ करके. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, मेंटेन योर व्हीकल रेगुलरली. हाँ, इस तरीके से चीज़ों को यूज करेंगे तो सही से अपन फॉसिल फ्यूल का यूज कर पाएंगे. सबसे पहला टर्मिनोलॉजी में है कार्बोनाइजेशन. तो सबसे द स्लो कन्वर्शन of wood into coal by biochemical process extending over million of years under the high temperature and pressure of the earth. Coal, a solid fossil fuel, black in color, obtained from the fossil of dead plants over a span of million of years. Destructive distillation, heat of a complex organic substance in the absence of air so that it break up into simpler volatile fraction. Exhaustible natural resources, the natural resources which are likely to be exhausted in the near future by various human activities. Fossil fuel, the fuels formed from the fossil of dead organism over a span of million of years. Fractional distillation, the process of separation of mixture of two or more liquids have different boiling point by collecting their vapor and at controlled temperature. Inhospitable natural resources, the natural resources which are not like to be exhausted by various human activities and are limitless. Natural gas, a combustible gas, mostly methane, which comes out along with petroleum from the oil wells. Next है chapter recap. Chapter recap में first point है अपना coal, petroleum and natural gas are classified as fossil fuels. Fossil fuels originated from the remains of living organisms and that existed millions of years ago. Over extensive periods, the remains of plants and animals were buried under layer of earth, undergoing transformation due to heat and pressure. Fossil fuel are finite resources. These are exhaustible and will eventually run out if not managed carefully.
Coal yield several important products include coal, coke, coal tar and coal gas. Coke is a pure from carbon used primarily in steel manufacturing. Coal tar is a thick black liquid used to produce various chemicals including dyes and medicine. Coal gas is generated during the processing of coal serves as a fuel source. The refining of petroleum produce several used substances such as petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, and lubricant oil. Both coal and petroleum resources are limited in nature. It is essential to use them wisely to ensure their availability for future generation and mitigate environment impacts. नेक्स्ट है असाइनमेंट. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following multiple choice question, which of the following is an exhaustible natural resource. इसका आंसर होगा कोल. नेक्स्ट है the process by which coal is formed from dead vegetation is called carbonization. What is the primary constituent of natural gas? Methane. Which of the following is not a fossil fuel? Hydroelectricity. The process of separating various constituents of petroleum is called fractional distillation. CNG stands for compressed natural gas. Next step now, fill in the blank. Fill in the blank में first है dash are energy resource that will be exhausted in the near future. तो इसके लिए आंसर होगा अपना fossil fuels. Next, the process of heating coal strongly in the absence of air is called destructive. Third है dash is the uppermost layer of coal found in coal mines. Peat. Next है the drilling of oil wells in seabeds is called dash drilling. तो क्या होगा ये offshore drilling. Dash is used as fuel in vehicles and is considered a cleaner alternative to petrol and diesel. तो CNG. Next है true and false. Solar energy is an exhaustible natural resource. False. Coal is formed from the remains of animals that lived millions of years ago. False. Petroleum is found in sedimentary rocks. True. Natural gas is heavier than air. False. The use of CNG as fuel helps in reducing air pollution. True. इसके बाद next step now. Very short answer type question, short answer type question, give reason, higher think order thinking, life skill, project, activities, assertion और उसके बाद additional question. इसके साथ ही चैप्टर होता है फिनिश. ये आप खुद से करेंगे. इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है. टिल देन बाय.